یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتا ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہیں نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. لیا ہم سے پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا برائے کرم الیکشن کرا لیں, آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ہے, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن, آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں بنیاد سے شروع کریں نا, الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر, کہ وہ بھی ان کو ڈسکریمنیشن بھی آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. لیکن سر آغاز کریں شروع سے, میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. یہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی تو رائے نہیں, شکر ہے. So let us start with, sir, the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218. ای سی پی کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی جی, اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے, یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل, یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں, ٹھیک ہے. سو یہ اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship, پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. 219E, 218 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218 does not deal with intra-party. That's my submission. Okay. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says that the election. All it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 اور 219 میں انٹرا پارٹی
पंचायती इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे। देखिए, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दें। अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को। वही मैं दिखाने जा रहा था सर, बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट को, फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन। आर्टिकल 17 का पार्ट था, बस उस पे मैं आता हूं। बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप्स ऑब्जर्वेशन वाज। ठीक है, ये सारी बातें सिंबल ये चीजें ये एक्ट के जरिए आ रही हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं। नाउ कम टू द लॉ। Sir, Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सर 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन जी, पढ़ दीजिए। 209 A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. इलेक्शन से I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेकंड पढ़ा अभी? 209 209. मतलब 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? सर 207 पढ़िए। मैं सारा आपको पढ़ूंगा। कहा ना, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट। 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी है, मैं भी आता हूं सर उसमें नहीं, लेकिन फिर वो आप मौकिफ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं, वो फिर आपका एक अलग मौकिफ है। नहीं, मेरा आप मौकिफ तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है, मेरा मौकिफ क्या है? मेरा मौकिफ ये है सर that under the law मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन कमीशन जी ये 207 कहता है। जी, बिल्कुल कराना है। मैंने तो नहीं कहता है, मैंने अंडर द लॉ कराना है, ठीक। लेकिन मेरा मौकफ ये है कि अगर इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया Certificate आप कानून ने, नहीं। उसमें वो उसमें प्रूव करे। नहीं, इलेक्शन से मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है। दैट इज माय केस बिफोर दिस वन ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैं मैकेनिज्म पढ़ रहा हूँ सर, मैं वही पढ़ूंगा। कह रहे हैं कि प्यार नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि शो कॉज आपको बुला सकते देख देना, इसलिए मैं इसलिए इस मौकफ में देखने जा रहा हूँ। 209 पढ़ रहा हूँ पहले मैं, 215 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं। पढ़िए, please. 2091 पढ़ते हैं दोबारा। सारा जुरिस्डिक्शन का ही तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई करना जी, चाहते मैं हैं। क्लियर आप बराए करम 208 पढ़ लें। 208 भी पढ़ लें। 208 पढ़ लेते हैं। देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना। हाँ, सही। 207 से शुरू करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी चलें, तो sir, then in that case, let us, because there will be relevance, let us start with 200. जी, Formation of a political party. नहीं, वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना। फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, All right. ठीक है। सो मेमोरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं सर, ठीक करें। if your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ठीक है, no quibble with that proposition.
A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable, and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ठीक है, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. अगला पढ़ लें 208 पढ़ लें. से पहले 200 कमेंट कर दूं उसको 207 पे. 207 does not give any jurisdiction to the election commission कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कन्वीन नहीं की जनरल मीटिंग तो वो उसका सिंबल रिफ्यूज कर दे. That is 207 पे ये is my comment and my submission. 208 पढ़ लेते हैं आप. 2081. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate कि आपने जो office bearers हैं वो elect होंगे according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission कि उनका काम है examine करना कि ये constitution violation हुई है कि नहीं, election हुए कि नहीं. आगे पढ़ते हैं सर. एक चीज law में clear आ गई. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. वो उन्होंने लॉ ने कहा कि 5 साल से ज्यादा आप नहीं कर सकते. जी. वही तो वो कह रहे हैं कि ये वायलेट किया है आपने. 5 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए. इतनी सी बात उन्हें है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है उनकी. वो ये नहीं कह रहे सर, वो ये कह रहे हैं आपने इलेक्शन कराया लेकिन उनकी रेगुलर कराया. पढ़ेंगे ना वो उसी एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का. इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म. उन्होंने कहा इरेगुलर, उन्हें कराया लेकिन इरेगुलर. नहीं, वो जब आपने कराए वो आपको मुस्तरद कर दिए. जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना उस पे. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ठीक है, equal opportunity है. I can't say कि women are not allowed. I can't say minorities are ये not जो allowed. 14 लोग हैं इनको इजाजत क्यों नहीं दी? दी जी, बिल्कुल दी. ये फैक्ट मैं वो कहते हैं, मैं यही तो पूछ रहे हैं आपसे. बिल्कुल दी इजाजत, बिल्कुल दी इजाजत. But question is, if नहीं दी, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and आपका local levels. कहना है सिविल कोर्ट इन तुर्बत. जी, आपका कहना है, ये जरा समझ लो ना बात. ऐसे आपने कह दिया ना गो टू सिविल कोर्ट. Correct. ऐसे बात नहीं चलेगी. आप दलाइल देना होंगे. Right. सिविल कोर्ट इन तुर्बत कैन undo the entire election of PTI or any political party because it's civil court. it can, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिंबल पे नहीं होगा. आप सिंबल को 2 मिनट छोड़ दीजिए ना. हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए. अगर suppose- देखिए एक बात है ना, या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए. देखिए ये बुनियादी बातें. हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो. ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है. ठीक है. अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है. भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए, फिर भी मतलब उसको थोड़ा सा टॉलरेंस जो हमारी खत्म हो गई है ना कि भाई पॉइंट अपना. हम भी तो, हमारे अदालत में भी तो डिसेंट होते हैं ना. डिसेंट का सरांखों पर. ठीक है, ये तो नहीं कि उधर दुश्मनी करते हैं या कुछ और शुरू हो जाए. वो उनकी अपनी जहानत से करते हैं. हमारा तो जमहूरी इदारा है भी नहीं ना. अगर सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है. आपको मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात.